live now. Okay. Okay. You are live now. Good afternoon and a very warm welcome to all our participants and August speakers of today's program. This innovative and interesting program has been organized through the auspices of Navi Mumbai Raigad Ophthalmic Association and through the wonderful support from Entered Pharma. Uh, today's program is specially directed and meant for the staff in the OPD and OT of eye care hospitals. And it is directed at looking at how the protocols of running OPD and OT and cleaning and maintaining the OPD and OT has changed over the course of the last 1 year in view of the COVID pandemic. I take this opportunity on behalf of Dr. Tushar Muni, President of Navi Mumbai Raigad Ophthalmic Association, Dr. Rajesh Kapoor, Vice President, and myself as Secretary to welcome all of you to this afternoon's program. Our first speaker is Dr. Neeraj Israni. He will be talking about OPD protocols. Dr. Neeraj is a young and dynamic new addition to our NROA family. He has a wonderful academic background, having trained at Narayan Nethralaya and has presented numerous research papers at various very prestigious international and national conferences. He has won many awards at these conferences, and his areas of interest include keratoconus and refractive surgery. I invite Dr. Neeraj Israni. Thank you, sir. If you allow me, I will share my screen. Yes, thank you so much for the warm introduction, sir. I will just share my screen. Just before I start, I will be speaking both in English and Hindi and trying to make this talk very simple for our staff members over here. So I will use more of Hindi and little bit less of English. And at the outset, I'd like to thank NROA for giving me this opportunity. Dr. Tushar Muni, Dr. Devendra, and Dr. Rajesh Kapoor. It's an honor for me to present in this meet. So आज हम लोग बात करेंगे OPD मैनेजमेंट न्यू नॉर्मल. न्यू नॉर्मल इसलिए क्योंकि पिछले 3 या 4 महीनों में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं और जैसे कि हमें इस बात का पता है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 नाम का एक पैंडेमिक आ चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स में अब एक तरह का दहशत हो गई है कि हम हॉस्पिटल में अभी जाने से डर रहे हैं और जो नॉर्मल साधारण ट्रीटमेंट के लिए भी पेशेंट आते थे, जैसे रूटीन आई चेकअप, वो भी नंबर्स गिर गए हैं. तो इस प्रोग्राम का खाली एक उद्देश्य है कि हमारे स्टाफ मेंबर्स को हम थोड़ा मोटिवेट करें और साथ ही साथ उनको हम ये भी समझाएं कि कैसे चीज़ें बदल गई है हमारे हॉस्पिटल में, अब हमें क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा और कैसे हम अब ओपीडी नई तरीके से हैंडल करेंगे. सो मैंने सोचा कि बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा एक स्लाइड डालेंगे कि कोविड-19, ये अभी सबको पता ही है कि कोविड-19 कैसे स्प्रेड होता है और कोविड-19 एक ऐसी चीज़ है जो एयरबोर्न नहीं है. मतलब ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि हवा में नहीं फैलती है, बट इट इज़ मोस्टली सीन बाय coughing or sneezing or coming in contact with the patient's droplets. तो इसमें इतनी डरने की बात नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटल स्टाफ भी हैं तो अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन लेके पीपी किट पहन के अगर हम काम कर रहे हैं तो इसमें इतनी डरने की बात नहीं है हॉस्पिटल में काम करने के लिए. ये मैं फर्स्ट चीज़
हमारे स्टाफ मेंबर्स को बताना चाहूँगा। मूविंग अहेड, अगर हम देखें तो कोविड-19 के बहुत सारे पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते होंगे लोग, और उसके सिम्टम्स सबको पता होंगे कि बुखार, खांसी और बदन में दर्द, ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। बट ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कोविड-19 की वजह से बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर इंसान अफेक्ट हो सकता है। तो अब जब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम कैसे इससे बचें एज अ हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर। जहाँ तक हमारी आई केयर कंसर्न है, तो हमें एक चीज का ध्यान देना है, और जो डॉक्यूमेंटेड भी है, कि रेड आई भी एक कोविड-19 का सिम्टम हो सकता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इन पेशेंट्स से थोड़ा दूरी बनाए रखनी है, बट डरने की कोई बात नहीं है। रेड आई एक सिम्टम हो सकता है। तो जब हमारे हॉस्पिटल में कोई भी रेडनेस का पेशेंट आता है, तो जब हम पेशेंट से रिसेप्शन पे हिस्ट्री लेते हैं, तो हमारे रिसेप्शन पे, जो मैं आगे बात करूंगा, एक फॉर्म रहता है, और वो फॉर्म में हमेशा ये 2 सवाल हमेशा हम पूछते हैं, स्पेशली टू द रेड आई पेशेंट्स, कि आपको टेस्ट और स्मेल में कुछ दिक्कत हो रही है रिसेंटली, जो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं कोविड के, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। सो मूविंग अहेड, ये चीज हमें जानना जरूरी है एज हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स कि व्हाट आर आई इमरजेंसीज। तो आई इमरजेंसीज आर सिवियर पेन, रेडनेस, डिस्चार्ज, एनी सीरियस आई इंजरी, सडन लॉस ऑफ विजन, या एनी रिसेंट आई सर्जरी जिसकी वजह से पेशेंट इज हैविंग पेन। सो दीज आर आई सर्जरीज। अभी अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है एज अ स्टाफ मेंबर, जो मैं बताना चाहता हूं कि हाउ टू प्रिवेंट दिस वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो कोरोना वायरस को प्रिवेंट करना है हमें, तो सबसे जरूरी पहली बात है हाथ वॉश करना। सेकंड है स्नीजिंग एंड कॉफिंग एटिकेट। आपको स्नीजिंग एज अ हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर, यू हैव टू टेक केयर कि आप स्नीजिंग एंड कॉफिंग, एक कपड़ा हाथ में नाक के सामने रख के फिर ही स्नीज या कॉफ करें, और बार बार अपने नाक और फेस को टच करने से अवॉइड करें। और एज अ हॉस्पिटल स्टाफ, अगर आप इफ यू आर नॉट कीपिंग वेल, अगर आपको किसी भी प्रकार का फ्लू या बुखार जैसे सिम्टम्स हैं, तो आप तुरंत अपने सीनियर्स को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करें। अब जहां तक हैंड वॉश की बात आती है, ये मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया है कि हैंड वॉश, बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स को ये जानना जरूरी है कि हैंड वॉश का एक पर्टिकुलर टेक्निक है, और एक प्रोटोकॉल जो हमारे ऑल इंडिया ऑफ्थल में भी बनाया गया है कि हैंड वॉश अगर करना है तो सोप वाटर के साथ 40 सेकेंड्स तक आपको हैंड वॉश करना है, या तो फिर सैनिटाइजर के साथ 20 सेकेंड्स तक करना है। और अब ये हैंड वॉश कब करना चाहिए? हैंड वॉश आपको हॉस्पिटल एंटर करने से पहले, मास्क पहनने से पहले, किसी भी प्रोसीजर में डॉक्टर को असिस्ट करने से पहले, प्रोसीजर के बाद, और किसी भी पेशेंट को टच करने या पेशेंट की सराउंडिंग को टच करने के पहले और बाद, ये सब टाइम के पहले आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। सो हैंड वॉशिंग के भी एक पर्टिकुलर टेक्निक है जो नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि पहले आपको हैंड्स को रिंस करना है, फिर साबुन से आपको यूज करना है, साबुन को नीचे रख के, फिर जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में दिखाया गया है, अपने जो पाम है, जो आपका सेंट्रल पार्ट है हाथ का, वहां पे पहले आपको हैंड वॉश करना है। फिर जो आपका बैक ऑफ हैंड है, जो पीछे है हाथ का, वहां पे आपको वॉश करना है। आपका जो अंगूठा है, उसका उसका जो बेस है, उसको आपको पहले वॉश करना है। फिर जो आपकी वेब्ड स्पेसेस है, जो उंगलियों के बीच में स्पेसेस है, बहुत टाइम हम हैंड वॉश में उसको निग्लेक्ट करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। हमारी जो रिस्ट है, जहाँ पे आप वॉच पहनते हैं, वहां पे भी वॉश करना जरूरी है। और लास्ट में फिंगर नेल्स, जो आपके नाखून हैं, वो भी क्लीन होने चाहिए। सो ये जो पूरा हैंड वॉशिंग का टेक्निक है, इट शुड बी एटलीस्ट 40 सेकेंड विद सोप वाटर, और 20 seconds, at least 20 seconds with a sanitizer.
अभी मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनाया है हमारे स्टाफ मेंबर्स के लिए, जो हम फॉलो करना चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में और करना चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है जैसे ही पेशेंट एंट्री लेता है, वो है टेम्परेचर लेना है आपको पेशेंट का। अब आई एम श्योर कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ऑलरेडी एक थर्मोमीटर में, डिजिटल थर्मोमीटर में इन्वेस्ट किया है। सो आपको एक टेम्परेचर लेना फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है पेशेंट का मास्क चेक कीजिए। किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में मास्क के बिना एंट्री बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और सैनिटाइजर, आजकल नॉन टच सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स भी आ गए हैं। तो अगर आपके हॉस्पिटल में नॉन टच डिस्पेंसर्स हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो यू कैन मैन्युअली गिव द पेशेंट अ सैनिटाइजर एंड पेशेंट कैन सैनिटाइज देयर हैंड्स। The next step, which is very important, is separate seating for family or relatives. कोविड के पहले हम देखते थे कि बहुत टाइम तक पेशेंट्स और रिलेटिव्स दोनों साथ में आके एक साथ आके बैठते थे, बट अभी ये चीजें बदल चुकी है। सो अगर पॉसिबल है तो हॉस्पिटल में एक सेपरेट एरिया या हॉस्पिटल के बाहर एक सेपरेट एरिया रखिए, जहाँ पे रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स बैठ सकें, और पेशेंट्स के लिए एक सेपरेट वेटिंग एरिया रखिए विद सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ये चौथी चीज है कंसेंट फॉर्म। तो कंसेंट फॉर्म इसलिए जरूरी है पेशेंट्स के लिए क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा और पेशेंट का डेटाबेस भी आपके पास रहेगा, और कोरोना कंसेंट फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा हमने क्या किया है कि हमने एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम है, जो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में हम लोग पेशेंट का डेटा फीड करते हैं, उसी में हमने एक प्रकार का क्वेश्चनर सेट किया है, इस प्रकार का जो आप 5वें नंबर में देखेंगे। सो वो क्वेश्चंस, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड सिस्टम या सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मैन्युअली ये फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, और बिफोर टेकिंग द पेशेंट इनसाइड द हॉस्पिटल या फिर रिसेप्शन पे आप पेशेंट से एक ब्रीफ हिस्ट्री ले सकते हैं कि ये फॉर्म में सब सवाल हैं कि पेशेंट कहाँ रहता है, पेशेंट को कोई सिम्टम्स हैं, पेशेंट लास्ट 1 मंथ में कहाँ पे ट्रैवल कर चुका है, पेशेंट कोरोना डिटेक्ट तो नहीं हुआ था। तो ये सब चीजें अब कंपलसरी हो गई है ताकि हमारे रिसेप्शन स्टाफ और हमारे स्टाफ को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे सॉफ्टवेयर में हमने एक क्वेश्चनर ऑलरेडी फीड किया है, जिससे आप पेशेंट को क्वेश्चन पूछ के उसका जवाब हम सॉफ्टवेयर में ही टिक कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपको एक लो रिस्क और हाई रिस्क, ऑटोमेटेड लो रिस्क और हाई रिस्क का एक स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा। अब ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में जो मैं थोड़ा 2 मिनट का वक्त लूंगा। ट्राइएज, अगर मैं आपको सिंपल अक्षर में समझाने की कोशिश करूं, शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, तो ट्राइएज एक प्रकार का सेपरेशन है। कि अभी ये फोटो अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग एप्पल्स हैं, ग्रीन एप्पल्स हैं, और जो बीच वाला ग्रीन एप्पल है वो थोड़ा रॉटन है, थोड़ा खराब है बाकियों से। ऐसा कहा जाता है, हिंदी में एक मुहावरा है कि एक खराब फल बाकी सब फलों को खराब कर सकता है। तो ये खाली एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको पिक्चर इसलिए दिखाई है क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक पेशेंट सिवियर इन्फेक्शन के साथ दूसरे पेशेंट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये ट्राइएज का जो सिस्टम है वो हर हॉस्पिटल में फॉलो करना ही चाहिए। अगर आपको कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है और उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन है, या फिर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हुआ है, या फिर कंजंक्टिवाइटिस है, या फिर किसी भी प्रकार का अदर दूसरी इन्फेक्शन है, बॉडी इन्फेक्शन है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप दिस पेशेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल पेशेंट्स। सो टॉकिंग अबाउट दिस, एक सेपरेट वेटिंग एरिया अगर हो सके तो इन्फेक्शियस पेशेंट्स के लिए भी एक सेपरेट वेटिंग एरिया होना चाहिए। तो ट्राइएजिंग पेशेंट्स जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं,
सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके हॉस्पिटल में जितनी भी सीट्स है, मेक श्योर कि एक सीट छोड़ के एक ही पेशेंट बिठाया जाए। और हमारे हॉस्पिटल्स में हमने अभी ये नया एक प्रोटोकॉल चालू किया है कि जो रूटीन आई चेकअप पेशेंट्स हैं और जो रेड आई पेशेंट्स हैं या फिर पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स हैं, उनको हम सेपरेटली बिठाते हैं और वी मेक श्योर कि वो कांटेक्ट में नहीं आए। और उनके लिए जो सीटिंग है उसका सैनिटाइजेशन, सब सीटिंग्स होती है बट वो सैनिटाइजेशन और फ्रीक्वेंटली करते हैं हम। अब ये एक और ज़रूरी चीज़ है कि आपके हॉस्पिटल में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। कोविड के आने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने रिसेंटली ये डिसीजन लिया है कि एसी एयर कंडीशन थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि एयर कंडीशन से सेम हवा सर्कुलेट होती रहती है। तो जितना हो सके अपने अपने हॉस्पिटल्स की विंडोज और अपने हॉस्पिटल्स के डोर्स ओपन रखिए ताकि फ्रेश वेंटिलेशन और सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन हो आपके हॉस्पिटल में। जैसे मैंने बताया, एयर कंडीशन इज नेसेसरी। अभी गर्मियों शुरू होंगी तो एयर कंडीशन विल बी अ मस्ट, बट जहां तक हो सके ट्राई एंड कीप, स्पेशली इन द ओपीडी जहां पे मशीन्स नहीं है, मशीन्स को एयर कंडीशन इज अ मस्ट। बट जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा क्राउडिंग हो रहा है, तो opening the doors and windows is better than keeping the air condition on. This is the most important slide मेरे हिसाब से कि as a healthcare professional आपको मास्क की इम्पोर्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है और मास्क को कैसे पहनना और कैसे उतारना है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखिए कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कभी भी आप हॉस्पिटल में आते हैं तो जो पूरा प्रोटेक्शन किट है वो पहनना तो बहुत ज़रूरी है, बट मास्क जब आप हॉस्पिटल में आते हैं तो जब काम काम पे एंट्री करते हैं, आप घर वाला मास्क सेपरेट रखिए। जो ट्रैवलिंग करते वक्त आप मास्क रखते हैं उसको सेपरेट रखिए। और मास्क पहनने से पहले अपने हाथ, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अगेन फॉर 40 सेकेंड विद सोप वाटर एंड 20 सेकेंड विद सैनिटाइजर। आपका जो मास्क है उसको हमेशा साइड से पकड़िए। तो अगर ये मेरा मास्क है, मैं हमेशा इसको इसके थ्रेड से पकड़ूंगा, साइड से पकड़ूंगा। सेंटर में टच अवॉइड कीजिए करना। आपका जो मास्क है उसको हमेशा पहनने के वक्त साइड से ही कानों के यहाँ पे डालिए और कोशिश कीजिए कि नीचे से पुल करे और सेंटर में जो आपका जो मास्क का जो बीक है उसको टच ना करे। तो इसको अवॉइड कीजिए टच करना। और जब भी आप मास्क निकाल रहे हैं तो वापस आपको हाथ धोने हैं, अपने हैंड वॉश करना है। वापस सेंटर से निकालना अवॉइड कीजिए, साइड से ही कान की तरफ से निकालिए उसे। एंड मेक श्योर कि एक बार जब मास्क यूज हो गया है, या तो उसे आप डिस्पोज कीजिए या फिर उसे अकॉर्डिंगली जैसा आपका हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है उससे ऑटोक्लेव करके नेक्स्ट टाइम पहनिए और वापस अपने हैंड्स पोंछ लीजिए। For the reception staff, I have few points. After COVID, the government has been very generous to us, and हमने देखा है कि जितने कैश ट्रांजैक्शंस पहले होते थे अब वो कम हो गए हैं। सो मेक श्योर कि आप यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे जैसे नए नए एप्लीकेशंस यूज करके पेशेंट को इनकरेज कीजिए पेमेंट के लिए। अवॉइड कैश एज मच एज पॉसिबल। एज द रिसेप्शन स्टाफ आप पूरा टाइम प्रोटेक्शन किट के साथ ग्लव्स पहने रखिए और मेक श्योर कि आप जब भी पेशेंट का कार्ड या कैश हैंडल करते हैं तो ग्लव्स आपके हाथ में हैं और सैनिटाइजेशन इन बिटवीन आफ्टर एवरी पेशेंट इज अ मस्ट। जैसे मैंने बोला, रिसेप्शन स्टाफ के लिए अगर आप 6 सवाल पूछ सके पेशेंट को, जो मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन किए हैं कि उनको कोई सिम्टम्स है, पहले उनको कोविड हुआ है, वो कहाँ पे ट्रैवल करके आ चुके हैं, उनको बाकी कोरोना के कोई सिम्टम्स हैं या नहीं। तो दीज बेसिक क्वेश्चंस इफ यू आस्क, जो फ्रीली अवेलेबल है, हमारे ऑल इंडिया ऑफ्थेल्म सोसाइटी ने उसको अभी फ्रीली अवेलेबल कर दिया है ऑनलाइन। ये बेसिक क्वेश्चंस पूछें। मेक श्योर कि आप
टेम्परेचर चेक करे पेशेंट का, एंड जितना हो सके जो आपके हॉस्पिटल के रिसीट्स हैं, बिल्स हैं, उनको आप व्हाट्सएप या ईमेल से सेंड करने की कोशिश कीजिए पेशेंट को, rather than giving a copy to the patient on the spot. ऑप्टिकल शॉप जिन हॉस्पिटल्स में है उनके लिए मैंने एक छोटा सा स्लाइड बनाया है. अगेन ऑप्टिकल शॉप, ऑप्टिकल असिस्टेंट जो है हमारे, उनके लिए आप हाथों में ग्लव्स पहनिए और जब भी आप ग्लासेस डिस्पोज कर रहे हैं स्टेरिलिटी मेंटेन कीजिए. और जैसे हमारे प्रोटोकॉल्स है 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन या 70% अल्कोहल से हमारे डेस्क को क्लीन कीजिए. और जो हमारा प्यूपिलोमीटर है ऑप्टिकल असिस्टेंट्स के, जिससे हम लोग प्यूपिलोमेट्री या प्यूपिल डिस्टेंस चेक करते हैं, पीडी चेक करते हैं, उसको भी सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो पेशेंट के काफी नजदीक जाता है. तो मेक श्योर कि वो भी सैनिटाइज हो. ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे हॉस्पिटल के बहुत एक इंटीग्रल पार्ट हैं. तो जितने भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, अगेन उनको अपने केबिन में रिलेटिव्स को अलाउ नहीं करना चाहिए. और ऑप्टोमेट्रिस्ट एक डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, पीपीई का यूज कीजिए. हमारी जो मशीन्स हैं जिस पे ऑप्टोमेट्रिस्ट AR NCT यूज करते हैं, ट्रायल फ्रेम्स यूज करते हैं, वो रेगुलरली जितना हो सके दिन में 3 बार 4 बार या फिर हो सके तो हर पेशेंट के बाद क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. और जितना हो सके उतना आप पेशेंट के साथ ज़्यादा टाइम अवॉइड कीजिए स्पेंड करना. जस्ट मेक श्योर कि आप पेशेंट का रिफ्रैक्शन करके पेशेंट को फास्ट ट्रैक करके डॉक्टर के पास पहुंचा दीजिए. जिन हॉस्पिटल्स में फार्मेसी है उनके लिए मैंने ये स्लाइड बनाई है कि एक सेफ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर मेंटेन करना चाहिए पेशेंट से. जब पेशेंट आता है तो अगेन द सेम पॉइंट कि प्लीज क्लीन एंड डिसइंफेक्ट योर टेबल विद 70% अल्कोहल और ब्लीच सॉल्यूशन. अगेन डिजिटल ट्रांजैक्शंस या ई बिल्स जितना हो सके आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए. अवॉइड एक्चुअल कॉपी ऑफ द बिल. एंड पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शंस भी जितने हो सके सॉफ्टवेयर बेस्ड रखिए या कंप्यूटर बेस्ड रखिए ताकि उसमें भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और स्प्रेड विल बी लेस. जो हमारी सैनिटाइजिंग टीम है, which is again one of the backbones of hospital staff, उनके लिए we don't need to give them any instructions. I think they're doing a very good job. But जितने भी machines और equipments हैं, डॉक्टर की डेस्क है, we have been following this protocol. हमारे हॉस्पिटल में दिन में 4 बार at every 2 hour or 3 hour interval the sanitizing team make sure कि वो पूरे हॉस्पिटल की चेयर्स, मशीन्स और डॉक्टर्स डेस्क, डॉक्टर्स टेबल एक्सेट्रा 3 to 4 times a day at least प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है उनका, उन सबका. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं काम के लिए तब हमें क्या करना चाहिए फॉर बिफोर कमिंग टू द OPD. सो ये 4 या 5 पॉइंट मुझे लगा काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें मास्क पहनना चाहिए ऑफ कोर्स व्हाइल कम्यूटिंग टू वर्क. दिस इज कंपल्सरी. जितना हो सके मैं अपने स्टाफ को बोलता हूँ कि व्हेन दे आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और बाय बस, try and wear covered clothes to prevent any exposure. Always keep 2 meters distance while traveling, and avoid touching public areas like buttons, lift buttons, etc. और जितना हो सके I encourage them to carry their own water bottles and tiffins and avoid visiting outside. एंड ईच वन ऑफ देम, हमारे हॉस्पिटल में हर स्टाफ के पॉकेट में एक सैनिटाइजर की बोतल हम देके रखते हैं ताकि दे ऑलवेज रिमेंबर कि दे हैव टू कीप सैनिटाइजिंग देमसेल्फ. सो दिस इज समथिंग दैट वी फॉलो. घर जाने के बाद भी ये पॉइंट भी मुझे काफी इम्पोर्टेंट लगती है कि जब आप घर जाते हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यूजुअली हम लोग ने स्टाफ को एक प्रोटोकॉल रखा है कि उनके घर के बाहर, in fact even for doctors,
we keep a bucket. They keep a bucket with soap outside, and just rinse yourself outside itself, and then avoid touching any door knobs, door handles. As soon as you enter the house, please make sure that you take a shower and sanitize yourself. एंड लास्टली आपके जो बिलोंगिंग्स आप हॉस्पिटल से कैरी कर रहे हैं घर आने के बाद, जैसे आपका आपके स्पेक्टिकल्स है, आपकी वॉच है, गाड़ी चाबी है, स्कूटर चाबी है, वो सब एक बॉक्स में रख के उसको भी सैनिटाइज कीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम सब काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, सो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट आपको गाउन, आपका मास्क या रेस्पिरेटर, गॉगल्स, फेस शील्ड, ग्लव्स, ये सब पहन के काम करना इज सेफ. तो प्लीज, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी. सो प्लीज, इवन दो अभी थोड़ा गवर्नमेंट इज trying to get COVID into control, but we as healthcare professionals and healthcare workers, हमें अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है. So please wear a proper PPE. And again, there are a lot of protocols which are freely available of how to wear a PPE kit and how to safely remove the PPE kit. Please follow these and make sure that the PPE kits are sanitized on time, and avoid using the same PPE kits without being sanitized or autoclaved. So एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने रखा है यहाँ पे कि अगर हमारे हॉस्पिटल में कोई हाई रिस्क पेशेंट आ जाता है, इफ और तो आपको कैसे इस चीज का ध्यान रखना है और कैसे आगे बढ़ना है. So the first and the most important thing is not to panic. If you find out that any patient who has entered your hospital was or is COVID positive, as a ophthalmic OPD, we need to always be connected with our seniors. So if patient is coming with a travel history of less than 1 month, then we should always document it in the questionnaire. जो मैंने आपको already समझाया है, हमारे questionnaires में जो हम patient से consent form लेते हैं, उसमें हमें document करके रखना है कि patient का travel history था 1 month पहले, और पेशेंट से डिस्टेंस मेंटेन करना है 1 मीटर का, और ऑलवेज इन्फॉर्म द सीनियर्स सच एज डॉक्टर्स या हमारे जो सीनियर स्टाफ है उनको इन्फॉर्म कीजिए, rather than panicking or rather than trying to क्रिएट अ सीन. आप पेशेंट्स को अकोमोडेट कीजिए आपके हॉस्पिटल में, या फिर सेपरेट काउंटर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक सेपरेट एरिया, वेटिंग एरिया पेशेंट्स के जैसे रखिए, and try and solve the problem. Second case, अगर कोई स्टाफ को कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. अगेन, योर लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट एज अ स्टाफ मेंबर. सो अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स, छोटे से छोटे सिम्टम्स भी आते हैं, देन प्लीज फॉलो दिस. अपने सबसे पहले अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कीजिए, घर पे थोड़ा आराम कीजिए, रेस्ट लीजिए, ट्रैवल अवॉइड कीजिए जितना हो सके, एंड अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, और जितना जल्दी हो सके उतना एक फिजिशियन डॉक्टर को दिखाइए. क्वारंटाइन का मतलब सबको पता है कि अब तो पता ही चल गया है. तो प्लीज मेक श्योर दैट अगर कुछ भी सिम्टम्स हो तो अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए, अपने घर वालों से दूर रहिए, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एनीबडी, एंड मेक श्योर दैट यू आर सेफ. लास्टली, सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने स्टाफ, जो आपके को वर्कर्स हैं, जो स्टाफ के, उनको मोटिवेट कीजिए, और पेशेंट्स को भी मोटिवेट कीजिए, बिकॉज वी आर इनटू दिस नोबल प्रोफेशन. एंड जस्ट टू एंड इट, मैं इतना बोलना चाहूँगा कि कोविड आने के बावजूद, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, वी विल नॉट give in to COVID, and we'll make sure that our patients trust us and we maintain a good environment in the hospital. Thank you. Thanks, Dr. Neeraj. Very nice presentation. And as Dr. Tushar said, we'll probably take questions towards the end. Yeah. So I'll introduce our next speaker, which
Obviously, nobody doesn't need any introduction. Dr. Rajesh Kapoor is well known to all of us. He is currently the Vice President of Navi Mumbai Raigad Ophthalmic Association, but he is better known probably as the Director of Suruchi Eye Center and Eyesight Laser Center in Navi Mumbai. He has a specialist cataract and refractive surgeon and has worked in England as well as in Ireland in Dublin. And over the course of his graduation, he was awarded gold medals and a silver medal. And other awards during his career include the Excellence in Ophthalmology Award in Navi Mumbai in 2017 and Arogya Dhana Sampada. He is a very popular speaker at various meetings, and his special talks include those on premium cataract surgery and LASIK and OT sterilization. So I hand over to Dr. Rajesh Kapoor so that he can take forward the discussion on OT protocols. Sir, you are muted. Has stopped in. Yeah, now you are on mute. Very nice. And if you can share the screen. I can't edit because admin has stopped my video. Kindly start my video. And I can't share the screen till it is allowed. Kindly start my video. Can you help? Yeah. Yes, Ramanji. Yes, sir. Done. Ramanji. Done. Done, sir. Done, sir. That's 1 fine. second. Yeah. Am I visible now? Yes, sir, visible. Please go ahead. Yes, sir. Perfect. I thank Dr. Tushar Muni, President NROA, and Dr. Devendra Venkatramani, Secretary NROA, and Todd for organizing this wonderful CME. I'm going to speak on Operation Theatre Sterilization and Maintenance Protocol in this present COVID era. I'm Excuse Dr. me, Rajesh Dr. Kapoor. Rajesh, Yeah. can you be a little louder or come a little closer? Yeah. Am I okay now? Yes, thank you. Okay. So I'm Dr. Rajesh Kapoor. This has been a new normal in the OPD for quite some time. We were using different kind of PPE and gadgets to work, but this has changed over the period of time. Even birthday celebration is difficult. You can't remove mask and eat. I'll be speaking in English, but anybody who has a problem, मैं हिंदी में बीच में बात करूंगा. So how to manage Operation Theatre? What is wrong? What is right? Has it become more difficult? I don't think so. हम लोग पहले ही बहुत strict OT protocols follow कर रहे थे as per NABH guidelines. So there are few changes which we have to make. Post-COVID, we have been working since 15th April 2020 and doing cataract and LASIK since May with all due precautions and one golden rule: never let your mask go down. As this has been told by Dr. Neeraj, which is very important. Pre-operative protocols, nothing special. Pre-operative investigation remains same. We are not doing any special COVID-related test. Arogya Setu app हमने कभी use नहीं की. But COVID screening, which was mentioned previously, is done for all staff and all patients. If any doubt, we refer it to a good physician. Pre-COVID, we were doing 8 to 10 cases per OT. Now we are doing 7 cases, as there are less number of cases. With extra precaution, the time between 2 cases has increased by 2 minutes only, which we spend by cleaning OT table and air circulation and air exchange. So basically, it's not a big change in the whole OT list. And for OPD patient, as it has been discussed, we were taking consent form. Now we have put just a COVID declaration, which is thanks to Dr. Kakadia. Source of COVID infection is not traceable in this pandemic, and we are taking all due care, but we are not responsible if you get COVID or COVID-like symptoms after visiting our hospital. We wish you a very good health.
to you all. But for operative patient, we are still taking COVID consent form as per the AIS guideline, and we are doing this COVID declaration and screening test where all the symptoms which were mentioned in the previous talk are taken. And if any doubt, we don't proceed further, and temperature is also recorded. So we come to the basic topic, operation theater. How is it planned? We know that from pre-COVID to post-COVID, nothing much has changed as per the plan of operation theater is concerned. There has to be a dedicated ophthalmic OT with barrier system, should be away from the OPD and inpatient area in a bigger setup, preferably on the top floor, or toilet OT के floor पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए. If required, it should be away from the OT zone. There are various zones and nomenclature may vary, like outer or protective zone, a clean or semi-sterile zone, sterile zone, disposable zone. Hindi mein, they are very well understood what I'm trying to say, but all these zones may not be applicable in smaller setups. You can keep working with whatever space your clinic allows, but I'll just show how we are working in our hospital. This is the outer zone on the ground floor. This is a pre-COVID pic, which includes the reception area for receiving patient and relative, and it used to be crowded in the pre-COVID era. And it also had administrative work and toilets, but we are not that careful while handling the patient. This is the post-COVID era where we can't crowd the patient. OT patients are given appointment in a proper manner. First two patients are called 10 minutes apart, next two at, and so on. Only one relative is allowed. So at a given time, only two patients with a relative are seated at proper distance. They all should be wearing masks and COVID screening is done. Then patients are shifted to semi-sterile zone for changing, cleaning, putting surgical mask and tape. So next zone is the clean or semi-sterile zone, which is at first floor and second floor. The most important area is this changing and the cleaning zone where the patient is brought. The street clothes are changed to the OT clothes, cleaning is done. और जो सबसे important चीज है, ये जो patient को surgical mask पहनाया जाता है, इसके ऊपर tape लगाया जाता है. Initially, patient used to get suffocated even by drape, पर अभी तक किसी patient ने surgery cancel नहीं की है due to this mask with the tape because they understand the safety aspect. Then they are shifted to this waiting area where two patients are seated at the proper distance. Once we have achieved this, the first patient is shifted to a semi-sterile zone at the second floor outside the operation theater, which has a single entrance from outer door, then an inner door to a sterile OT. In all this, we have to maintain a strict social distance, that no crowding should be done, and the mask has to be properly used. This is the autoclave zone or scrub area, which is same as the pre-COVID zone in a semi-sterile area, which has a vertical autoclave and scrub zone. But the B-class autoclave lies in the sterile zone. The scrub area should have a stainless steel wash with elbow operated or foot operated zone, as well as the AquaGuard water, which is considered to be the safest. There has to be a clock and scrubbing instruction as per NABH protocols. This remains same as we are doing in the pre-COVID, except the mask has to be N95 instead of what we are wearing before. So I'll just mention what has changed in the post-COVID era. Donning and doffing of N95 mask is the most important aspect which has changed. We can go on discussion regarding use of PPE, but PPE is not that important. As important is N95 mask. There are enough videos on YouTube regarding this, but always wash your hands properly before donning N95. After donning N95, a sterile tape should be applied and checked for any leakage. These two parts are very important in preventing the virus. If we wear the mask very carelessly and there is a leakage, we are not protecting ourselves. Even if you are not using PPE, rest of the protocols remain same. Doffing is very critical, so remove gown, gloves, then wash hands before doffing. An N95 mask should be put in proper place or discard as per the hospital protocol and wash the hands again. So I'll re-emphasize that using N95 mask is very, very important, and wearing it and making it leak-proof is very important if you are working in an operation theater. Storage zone in the semi-sterile, nothing changed from pre-COVID to now. You thoroughly clean it and maintain it as you were doing it before. Now comes the most important aspect of operation theater, which is the sterile zone of operation.
theater inner part. This is the pre-COVID pic, which shows it is quite crowded, but it should have a closed or packed window. OT table should be away from entrance. If it has a second door, it should open toward the sterile corridor. Initially, we had one anesthetic plus 4 OT staff at a given point of time. But in post-COVID, we have same team, but at a given point, less staff in the OT so that it is not crowded. One anesthetic should be there, which is always mandatory. One OT trolley nurse, one supporting nurse. This is a minimum amount of person which should be there with the operating surgeon. One assistant for cleaning OT table between patient has to be there. One assisting for shifting the patient and taking care of outer patient should be there. And the basic rule, N95 mask for all, gloves for all. PPE is arguable. अगर आप use नहीं भी कर रहे हैं, proper gown use कर रहे हैं, that's fair enough. We can take care of ourselves. If I talk about myself as a surgeon, again, N95 mask should be double taped. I tape it 2 times so that there is no leakage. This has to be made sure because if there is a leakage, हम operate नहीं कर सकते हैं due to our breath, the optics becomes hazy as well as it gives us a good protection. So I spent quite a time in making it leak proof. No goggles, no face shield. I tried to use, it didn't work for me. No double gloves. I used to use socks. You can wear a shoe cover if required, not mandatory. And again, PPE, if you want to use it, you can use it, but even a good clothes, surgical gowns are good enough. Then comes the disposable zone. जो हम पहले करते थे, where biomedical waste is disposed away from the OT, has to be done in the same manner. And after surgery, reverse sequence of zones for patient disposable from a sterile OT to a semi-sterile zone to a first floor to the exit. But in this pic, it is quite evident it was crowded at that time. We were not maintaining social distance and patients were not wearing masks, neither we. In the post-COVID era, this has changed. The patient comes off the OT, it's a single person handling until the patient is disposed to the exit area. There has to be no crowding and we have to maintain the social distance and mask has to be there all the time. These few changes are very important, but they are not very difficult to maintain. Now, when we talk about the post-COVID era, the most important thing is the maintenance of air, how we are handling the air. And this is done by air ventilation system. So requirement for a well-ventilated and filtered OT is temperature, which has to be between 21 plus minus 3 degrees. So ideal is 22. Humidity should be 40 to 60% because a high humidity can cause microbial growth and low humidity can cause fire. And OT staff has to look into all this aspect. Air exchange in pre-COVID era was 15 to 20 air changes per hour, but now 28 to 30 air changes per hour are considered ideal. Yani har 2 minutes ke baad there has to be an air exchange, so fresh air should be there. This is an important aspect in post-COVID era. There has to be a positive pressure in respect to the clean zone. I just want to make you all look at this laminar airflow picture. This is a schematic diagram which shows air एक बहुत ही filtered HEPA filter के through होता हुआ operating zone में positive pressure के साथ आता है. And this air is ultra clean with 99.97 efficiency, which can filter anything above 0.3 micron. And most of the bacteria and fungi are above 0.3 micron. So this air is virtually bacteria and fungus free. But the problem is it can't filter the viruses, which are about 0.3 micron and less. So it can't filter a COVID virus. So it can't take care of COVID disease. So we have to do something with this laminar airflow for the present era. So here comes the use of UV light in post-COVID era, which has become a very useful tool. Dr. Jagdeep Kakadia has been in forefront in educating us about UV light. I thank him personally. UV lights can be incorporated in OPD OT for protection from any virus. Numbers and watt of UV lights depends on the area. I'm using it very selectively, which is I'll discuss. It has safety issues, so we should be very careful too. It is a very big topic and I'm not going into its detail. But I'll just show you how I am using it in laminar airflow. As I said, HEPA filter can't filter the viruses.
So I use UV light. I have fitted one extra 18 watt UV light in the HEPA filter, which already have one extra 18 watt UV light. Apart from that, at air suction zone, we have fitted one extra 18 watt UV light. So this gives you a good protection while the air circulation. Those without laminar can fit adequate UV lights on the false ceiling and the walls, but to protect themselves, they have to go out for 2 minutes while using them between the cases. While in laminar with the air circulation, you can stay inside the OT, wait for 2 minutes and take the next case. Now these are for OPD. They are ready-made 38 watt UV lights with sensor and timer, but they are costly. There are another plain UV lights which can be bought directly from distributor, which are of 6, 11, 15, 18, 25 or various watts. As per the requirement, you can take them. The most common is a 11 watt UV light with choke, which comes with RO filter unit. And it just costs rupees 500. And it can be used to make a treatment module as advised by Dr. Kakaria. Fortunately, we were fortunate enough to never use this treatment for COVID. And this can be also used for making this air sterilization or UV boxes just from your trial box, and it costs 500 rupees, and you can use it for sterilizing masks or files or any other thing which you wish to use. Now, if you are using air sterilization or air ventilation system, the important aspect is to validate it, whether it is functioning properly or not, whether in pre-COVID or in present COVID era, which becomes more important. And how is it done? It is done by a third agency, जो ये सारी चीजों को देखती है, air velocity test, air changes per hour, positive pressure test, HEPA filtration test, temperature and humidity test, and particle count test. ये सारे टेस्ट वो एजेंसी करके आपको रिपोर्ट देती है, which tells you about everything is normal or not. But the important thing is this air changes per hour, as it shows 39.4. So anything above 30 gives you a very good protection. यानी हर 2 मिनट में लगभग आपके OT का air change हो जाता है. Then you are in very good zone while doing multiple cases. So इसी तरह से it gives you about positive pressure. It gives you the percentage of leakage, and it gives you the quality of the air with the temperature and humidity, and tells you it's a class 100 air. Now, ये सारी चीजें technical हैं, but I'll request all OT personnel and all the staff to know about this, because this is maintained by OT personnel. The doctor and the consultant can't look into its detail. I'm fortunate my OT staff does look into all this, and this air validation has to be done at a regular interval as per NABS protocol, and many a time from the different agencies, not from the same agencies. पर क्या लैमिनर के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं? Is it mandatory for high quality surgical care? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Laminar is costly. If resources are limited, you can manage well just with good OT practices. Because जो सबसे जरूरी चीज है, a restricted entry in the OT, which is traffic control. हर आदमी बाहर का OT में नहीं जा सकता. You have to change it to fresh clothes. No staff with infection should go in. OT etiquettes and manners are not known to many doctors also, so they should not be allowed. And in present era, N95 mask and UV light are very important tool for protection from the virus. These are the few other things, like after OT, we keep instrument for 5 minutes near UV light. पर इसमें एक्सपोजर प्रॉपर होना चाहिए, इसका ख्याल रखना, बिकॉज जहाँ पे यूवी लाइट नहीं लगती है वो एरिया सैनिटाइज नहीं होता है वायरस से. एंड दीज आर वेरी चीपर टू मेक. यू कैन मेक इट ऑन योर ओन, बट दीज यूवी लाइट गैजेट्स आर रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट ऑन डिफरेंट फॉर्म्स एंड फॉर्मेट, बट दे आर वेरी कॉस्टली इफ यू बाय फ्रॉम आउटसाइड. Another thing is we sanitize mask also. As per AIS guideline, we can use N95 mask 3 times after air drying and keeping them in paper bags and reusing on 4th day. हम लगभग वही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, but after one use we keep them in UV box for 5 minutes and then air dry and keep them in autoclave paper bags with a date put on it and then reuse them on the 4th day. So जितने भी स्टाफ हैं सबके ऐसे पेपर बैग्स बने हैं. After one use we do the same cycle and then throw them, as we have discussed just now.
चाहे पहले का एरा हो चाहे अभी कोविड का एरा हो, ये तीन चीजें ऑपरेशन थिएटर स्टाफ को कभी भी नहीं भूलनी चाहिए. क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन. दिस इज द कोर they have to understand. Cleaning is all surface should be free from visible dirt, which reduces the bacterial and any other infection count. कभी भी झाड़ू ओटी में नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में. And cleaning is more important than disinfection and sterilization. अगर आपने सफा नहीं किया तो आगे के सारे स्टेप्स बेकार हैं. Disinfection is freeing the concerned object of all organisms, and the disinfectant which we use are phenols, bacillocid, Incidor, EcoShield. ये कुछ common name है जो अलग-अलग hospitals में लोग use करते हैं, and we are using Incidor and sodium hypochlorite at present. Sterilization is a very big term. Technically, it means eliminating all living organism, and it is impractical to sterilize entire OT. Therefore, current practices concentrate on disinfection. But in India, जब तक हम किसी भी तरह का AC OT में use कर रहे हैं, चाहे window या split, and if we don't use HEPA filter or laminar flow, we need to follow some fumigation or fogging protocol. And the common one are formalin fumigation and some safer chemical. Formalin is little toxic, but it is very effective. For 1,000 cubic feet, we can use 30 ml, 40% formalin in 90 ml of clean water with the aerosol spray to be left for 6 hours, then closed out. Similarly, 35 ml of 40% formalin in 10 gram of potassium permanganate and leave it for 24 hours and then neutralize by liquid ammonia. There are other safer chemicals for fogging like aldicol, EcoShield or Envidil, and Incidor. But they all are based with water. In सबको पानी के साथ fog किया जाता है. And I always used to wonder what happens to the water which goes into the OT. This is a CCTV footage which is showing that a great mist is created when you use any water-based fogging protocol. ये जितना भी पानी OT में गया है, ये सारे instruments पे, टीवी पे, appliances पे, electrical switches पे, सब मशीनों पे settle हो जाएगा और 2 साल के अंदर सारी चीजें धीरे-धीरे खराब होने लगती हैं. So if you are using water-based any fogging protocol, you should be very careful, take out everything or cover everything, otherwise be prepared to suffer losses over the period of 2-3 years. And this is for mainly OT patient or OT staff who are doing these protocols. Now, how to follow these protocols? Daily cleaning and disinfection जो हमें करना है, at least 2 बार दिन में, एक बार OT के पहले और एक बार OT खत्म होने के बाद. Clean and mop OT with chemical disinfectant, whichever you are using in your hospital. Floor, walls, doors, handles, OT table, trolleys, microscope की body, फैको मशीन, जितने भी सर्फेसेस हैं वो आपको पूरी तरह से साफ करने होंगे. कहीं भी डर्ट नहीं होनी चाहिए, ये पहली चीज है. और जितना भी वेस्ट है डेली डिस्पोज होना चाहिए. सारे ओटी स्लीपर्स डेली क्लीन होने चाहिए. And how it is done? Normally 3 bucket system is very ideal, but at least 2 bucket system आपको follow करना चाहिए. What is it? The first bucket has water, second bucket again has fresh water for rinsing, and third bucket with a disinfectant where mop is immersed in solution and the floor mopped liberally. This is a schematic diagram and this is how we do it. 2 buckets में पानी है, आप चाहे तो एक ही रख सकते हैं, but it makes the mop more cleaner and you use it liberally and clean it properly. In this picture, you can show all the surfaces, चाहे OT table हो, चाहे trolleys हो, चाहे surface हो, चाहे wall, चाहे windows, सब जगह पे आपको thoroughly daily clean करना चाहिए before and after OT. Outside doors, machines, microscope, कोई भी surface को गंदा नहीं छोड़ सकते आप. And सारा waste जो भी उस दिन का इकट्ठा हुआ properly dispose होना चाहिए, कपड़े proper धुलने चाहिए. This applies now, this applied before also. So what are the minor changes which has happened in the post-COVID era? OT table is cleaned by 0.5% sodium hypochlorite between cases. हर एक ऑपरेशन के बाद टेबल को 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्लीन किया जाता है. ये बहुत ही कोरोसिव होता है, हाथ को जला देता है. ग्लव्स के बिना आप इसको कभी भी क्लीन नहीं करें और इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ नहीं करें. इट इज़ नॉट ओके.
और जो भी सामान हम ओटी में यूज करते हैं हर एक पेशेंट के बाद वो हमें फेंक देना चाहिए। बेडशीट हमें डेफिनेटली चेंज करनी चाहिए हर पेशेंट के बाद, जो नीचे और ऊपर दोनों हर पेशेंट के बाद चेंज करनी चाहिए। दिस टेक्स एक्स्ट्रा 2 मिनट्स। इस पूरे प्रोसेस में जो समय लगता है दैट इज गुड इनफ फॉर अ सर्कुलेशन एंड एयर एक्सचेंज, एंड बाय दिस टाइम यू आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट पेशेंट। आफ्टर ओटी all clothes should be soaked in diluted sodium hypochlorite for some time before washing. It gives you good disinfection. But इस पूरे process में we come back to the golden rule, as we are doing since day one. Proper mask should be worn by all staff and patient throughout. And the second aspect, though it is not related to the COVID care, but record keeping is very important. If something goes wrong, you have to have all your papers ready. Your OT register with all the entries, all details should be there. You're following autoclaving protocols with B class and vertical. सारे stickers आपके होने चाहिए, Bovidic test, vapor line, signal log, सबकी entries, vacuum test, date wise cross sign. And if you're following a fumigation protocol, उसकी entry, temperature, humidity, सारी चीजों की proper entry होनी चाहिए, which are important for NABH also, or as well as if something goes wrong, आपके records clean होने चाहिए। इसके अलावा वीकली आपको एसी फिल्टर्स क्लीन करने चाहिए, डिह्यूमिडिफायर फिल्टर्स एंड हेपा प्री फिल्टर्स, इनको केमिकल डिसइंफेक्टेंट में डुबो के ड्राई करके दोबारा लगाना चाहिए। मंथली टर्मिनल ओटी क्लीन करनी चाहिए, सारा सामान निकालें, सारे इक्विपमेंट को निकाल के सारी चीज़ें क्लीन करें। और 3 मंथली आपका लैमिनर फ्लो सर्विसिंग होना चाहिए, आपका रिमाइंडर रहना चाहिए, वो आके पूरा देख के क्लीन करके जाए। एसी सर्विसिंग होनी चाहिए, वाटर टैंक क्लीनिंग विद ब्लीचिंग पाउडर और स्ट्रक्चरल एनालिसिस फॉर एनी क्रैक्स एंड लीक, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। ये हम पहले भी करते थे, अभी भी करना है। कहीं ब्रीच हुआ तो वी शुड बी इन प्रॉब्लम। सो इन सब के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका प्रूफ होना चाहिए कि हम सब बराबर कर रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज गड़बड़ कहीं हुई तो हमें पता नहीं चलेगा व्हाट हैज गॉन रॉन्ग। सो एयर, सरफेस एंड वाटर आर द सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, सो यू शुड डू अ थिएटर सर्वेलेंस। एयर सैम्पलिंग होनी चाहिए by automated slit sampler. The permissible limit is 35 colony forming units per cubic feet. 0 आता है, colony count बहुत अच्छा है, but up to 35 units is good enough. At least monthly करना चाहिए, but if you can do it 15 days, which is good enough. Surface sampling, जितने भी surfaces हैं आपके, walls, floors, scrub area, OT table head, trolleys, medicine trolley, GA trolley, microscope handles, Phaco machine surface, AC duct, सबसे स्वाब लेके आपको इसको कल्चर के लिए भेजना चाहिए। दिस गिव्स यू द एफिकेसी ऑफ सरफेस डिकॉन्टामिनेशन प्रोसीजर कि आप कितनी अच्छे से सफाई करते हैं। वाटर सैम्पलिंग मंथली करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कोलिफॉर्म एंड स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। और ये जितनी भी रिपोर्टें आती हैं, इनका रिकॉर्ड आपको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। ये सारे सरफेस शोइंग नो ग्रोथ, एयर सैंपल नो ग्रोथ, इसी तरह से वाटर कल्चर नो ग्रोथ, और आपका वर्टिकल एंड बी क्लास ऑटोक्लाव showing no growth. A record, in any case things go wrong, can be a proof in the court or any other area that we were taking a good care. Rest, in a pandemic, we can't control many things. Apart from this, a good team is very important. This picture is for pre-COVID era, so हमने mask नहीं पहने हुए, so we haven't taken any picture now. I thank you all for a patient hearing, and I wish you all the best and keep taking care of your hospital. Thank you. Thank you, sir. Very nice presentation. I think very comprehensive and lot of things for everybody to learn. I invite our president, Dr. Tushar Muni. He, as I mentioned for Dr. Kapoor, he also does not require any introduction, but just as a matter of formality, he is the president of Navi Mumbai Raigad Ophthalmic Association, and he is a very eminent and senior practicing surgeon, eye surgeon at Vashi, with a special interest in retina. I invite him to give us a talk on Phenocaine.
Good afternoon to all in one. Thank you very much for the brief introduction, Dr. Devendra. And I congratulate Dr. Rajesh Kapoor and Dr. Neeraj for their wonderful presentations today. I am sure that it has helped all of us, including our staff, including our OT staff and OPD staff. Here I'm going to, am I audible? Yes, sir. That's fine. Here I'm going to take you through a very important step of cataract surgery. All of you must know that before cataract operation, we put some dilating drops in patient's eyes. Some of us gives it to patient to be used at home, and then they come to the clinic with dilated pupil. And some of us call patient half an hour or 1 hour early and start putting drops when patients are in the clinic before surgery. So all of you know, आपको सबको पता है कि cataract operation से पहले pupillary dilatation जो है वो बहुत ही important है. अगर कोई patient का pupil dilate नहीं होता है, तो आप definitely देखेंगे कि आपके doctor जो है, आपके sir जो है, he'll be little annoyed, he'll be little uncomfortable, and he'll be little worried कि patient का pupil क्यों अच्छा dilated नहीं है. And as you know, if it is a soft cataract, grade 2 cataract, then it is little easier to remove through even small pupil also. But for harder cataracts, as you know, it is very, very important to have proper dilatation of pupil for best visibility. And even to put an implantation, lens implant also, we need to see our axis margins. For that, pupillary dilatation is very important. And to put a toric lens in proper axis. For this also, we know that proper pupillary dilatation is very, very important. So cataract surgery with intraocular lens implantation requires adequate pupillary dilatation. Not only pupillary dilatation, but sustainable, stable mydriasis, pupillary dilatation. So what are the different means with us to dilate the pupils? As you know that we put some dilating drops, especially topicamide we use for dilatation of pupil at home. And once patient is in the clinic, then we do use topicamide plus phenylephrine combination for better and full dilatation of pupil. But you know that frequent putting of these dilating drops in OPD is causing some irritation in patient's eye, and sometimes they produce some epithelial abrasions or epithelial erosions also. तो वो कॉर्निया की सरफेस जो है उसको थोड़ा सा हेजी कर देता है, frequent use of these drops. So do we have any other means? Do we have any other means of dilating pupils on table? जैसे हम कम से कम ड्रॉप डाल सकें प्री ऑपरेटिव, और ऑन टेबल पेशेंट को लेते हैं तब थोड़ा सा टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज करके then we can make a side port and inject some medicine with which we can achieve good dilatation of pupil and sustainable, stable dilatation of pupil, which at least lasts for another 20-25 minutes so that we can finish our job properly. Intraoperative complications, prolonged surgery, increase risk of endophthalmitis and macular edema. So we want our cataract surgeries to get finished quick without any complication. And for that, absolute mandatory is to achieve good pupillary dilatation. It is said in European Observatory of Cataract Surgery survey that importance of stable mydriasis during surgery was rated as 9 on a 10-point scale. Overall results of this survey also indicate that the stable mydriasis were more important to surgeons than the largest size of dilatation of pupil. So here we have some new medications which are a combination of phenylephrine, topicamide, and an anesthetic, that is lidocaine. And this can be safely used in proper proportion during operation after creating a side opening in cornea or limbus and achieving good
preoperative or peroperative dilatation of pupil, anesthesia inside the eye, and sustainable dilatation of pupil. So intracameral injection recently available. We have been using it since almost last 2 months. Our observation is whenever we have any refractory case, कुछ ऐसे cases हैं जहाँ पे pupil dilate नहीं होता है. तो ऐसे case के अंदर when we start operation, intracameral injection देते हैं. The medicine's name is Phenocaine Plus. When we inject this in 2.2 ml quantity, then we observe that within 30 seconds, pupil starts dilating, and the dilatation of pupil is achieved by almost 3/4 of the size of the cornea. So adequate dilatation of the pupil is achieved, and the dilatation is maintained for at least another 20 minutes, 15 to 20 minutes. So surgeon gets enough time to finish all the steps of cataract surgery properly. Significantly, it reduces the pain also, sensation also, of pressure also. And just before IOL insertion, patient ko kabhi feel hota hai. We have to talk to the patient that you will feel something while I am putting the lens. ये सब symptoms patient के जो है वो कम हो जाते हैं with this medication. 95% of the pupillary dilatation was achieved with this mean of 28.6 seconds after administration of this intracameral injection. This injection is not giving rise to any post-operative inflammations or corneal endothelial toxicity or keratitis. So it is reasonably safe. This is the name of the injection. It's Phenocaine Plus. This is the product. It has a shelf life of 24 months. It can be stored in at room temperature below 30 degrees Celsius. And the composition, as I told you, is tropicamide, phenylephrine, and lidocaine. In our experience, we see a good role or great role of this medication during cataract surgery. Only limitation that we find is there is a condition which is known as floppy iris syndrome or IFIS. In this situation, even this medicine also is has got limited role. So for that, our colleagues, eye specialists, do use some iris hooks or some other devices to dilate the pupil and keep pupil away from the phaco-probe or away from the side port incisions. Thank you so much for your patient hearing. Thank you, sir. I now invite any questions from any of the audience members for either Dr. Neeraj or Dr. Rajesh, sir. We are open for any discussion or any points one may wish to add or suggestions are welcome. So let me begin this discussion. As in chat box, we don't have any questions put forward. I had a question for both the speakers. How do you reduce OPD time of your patients? Tell 2 or 3 very effective steps to reduce OPD time of your patients, especially when we request our optometrists to dilate the pupil and have a look at looking at the retina or some other reason. At that time, so many times patients wait for more than 45 minutes, 1 hour, and then they complain that, sir, you have taken long time. Dilatation must have happened within 15 minutes, 10 minutes, but why I have been waiting for 45 minutes? So I would request Dr. Neeraj to say some solution for this. Sir, thank you for the question. I believe that having set protocols which are predetermined beforehand, before the patient enters the hospital, that is the way to go about. So, for example, if a patient is, like you said, dilatation takes a lot of time. We should make sure that we have
a set protocol for the patient, a set time limit for each particular step. For example, when the patient is entering the hospital and coming to the reception, we should have enough staff, at least 2 receptionists, so that one patient is focused to one receptionist and the other doesn't have to wait. That's the first thing. If it is feasible for the hospital. If it's not, then the receptionist has to basically work on it. Moving ahead, there should be a patient coordinator, again, if it is feasible to the hospital, to make sure that the staff is taken from the reception to the next particular room or next particular test. The optometrist, which I already mentioned in the talk, that the optometrist should not allow any relative to come into the room, so that and take a brief and a quick history rather than asking everything in detail, which is going to be asked by the doctor. A very brief history for the patient should be taken, and after the refraction is completed, again the next step, before refraction, again AR and NCT, which is taken in almost all the places. There should be a attendant to make sure that that is also done swiftly. Then the next step is going to the doctor. So this is how there should be a set protocol for the hospital. As long as dilatation is concerned, again, one staff should be dedicated for making sure that after every 10 minutes or 15 minutes, he's checking the dilatation. If the drops are needed, the drop is instilled to the patient on if the patient is not getting dilated, to increase the frequency of drops. Thank you so much. Thank you. Dr. Rajesh, your feedback? Sir, we have set a time limit of 30 minutes. From the patient steps in at reception, his time is noted and it comes to me immediately. And then I personally am looking at the time of the patient and make sure that he is or she is disposed in 30 minutes, goes out of the hospital. This is my personal outlook. And initially, as we were waiting for full dilatation, even a small or little semi-dilated people, I'm quite comfortable and make sure they go well within time rather than waiting for full dilatation. And sometimes even due to crowd, if it is required, I call them at different time. But we make sure they go in 30 minutes. Yeah, that's very nice. It will be very important to keep on talking to patient at least every 15 minutes, that we know that you are here for dilatation of pupil and we have not forgotten that. Sometimes they get irritated if they are spending long time. Yeah. Sometimes it happens during this period that after 5 days or 7 days, you get a phone call from your patient or relative that Doctor Sahab, 7 days or 6 days have passed, operation हो गया है, लेकिन आज मुझे थोड़ा feverish लग रहा है. Do you feel that I can have COVID? Do you feel that I should get tested? तो ऐसी सिचुएशन में आप पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं और आप हॉस्पिटल में स्टाफ को कैसे अवेयर करते हैं regarding this incident? Can I answer? Yeah, please. Fortunately, this has not happened somehow. It's lucky. But if this happens, definitely I'll ask them to see a physician. And if physician advise them to go for checking, because we just simply start thinking about COVID. It can be a simple viral, it can be simple exertion. If he or she advises, we ask them to let us know also. And we can take further steps. But it has not happened somehow. Right. That's fine. Neeraj, your feedback regarding this? Sir, it has happened with me multiple times when the patient has consciously they've called us and they've told us that आपके hospital में 7 दिन पहले आया था मैं and हमें in fact one patient also told that the patient turned out to be COVID positive. And at such times, at that particular time, first of all, we try and avoid to spread the news because the staff gets very, so whoever comes to know, we make sure that it is not spread too much, first thing. Second thing, we try and go back to that history of the patient and we try and see what the patient came for and where all the patient went. And of course, with proper management and precautions, I don't think this should be, there's anything to be worried about. And like Sir said, of course, please refer to the patient to the physician and make sure that the patient is fine. Yeah. So you would not recommend your staff's investigations for COVID?
Sir, with proper precautions of the staff, I feel when the staff is already wearing a proper PPE kit and the social distancing is maintained, I believe that unless there are any symptoms or any problems the staff is facing, it just creates a ruckus in the hospital and a sense of fear in the hospital. So Yeah. rather than being in a sense of fear, I think we should try and be positive about it and make sure that everything is right, and of course make sure that the staff is fine. Yeah. Our motto will be our OPD should not spread infection to other patients also, you know. Yes. So what I would recommend here is we can talk to our staff, because most of us has got very young people as a staff, and these young people are most of the time carriers. So if we find that they are in touch with some people who were COVID positive, then we do, or we should recommend them their antibody test at least. And if they show, then they are to be made aware that you were in touch with those patients and you were exposed to the infections. So be more careful about it. And at least from our clinic, no more infection should spread in the society. That's what yeah, correct. What will be your message to staff regarding vaccination, Dr. Rajesh? Yeah, I was talking to my assistant today only. She asked me whether, sir, you will take the vaccine or not. And I said, no. At present, I'm not sure about it. Most of us have been through this era without much problem, as we are taking care of mask and other things. Till it is absolutely necessary, I'm not sure that vaccine should be taken, because we are not sure about its protocol. So we are not waiting for any vaccine. Take care about the mask. That is my main recommendation. Yes. Thank you so much for enlightening us about that. I saw you wearing OT gowns, which were, I think, disposables in your OT, Dr. Rajesh. No, sir. We started with Which disposable. material you use? We started Okay. with disposable, but So then we are using normal gowns at present, washable gowns. Right. Right. That's fine. That's fine. Very nice. And as far as humidity is concerned, the OT humidity is throughout your OT sessions, it can be maintained. Because what is my experience is when I try to maintain humidity at 40%, then my air conditioning system needs to be too cool. It needs to be at 17, 18 degree. Right. And it becomes very uncomfortable to maintain humidity. So initially, all these recommendations were there to maintain a temperature of 24 and high humidity to kill virus. But over the period of time, this has been not proven true. So we work at our comfortable temperature of 20 degree, where humidity is around about 60%. We are not bothering much about that aspect. As I said, air ventilation, air circulation is more important aspect. Right. That's fine. That's wonderful. Any other questions from the viewers, audience? Dr. Devendra, your comments? No, I think a lot of points have been covered and quite comprehensively. So, Yeah. That's fine. So now you can propose vote of thanks. sure. So Yeah. I, on behalf of Navi Sir, Mumbai Raigad Association, Sir, Yes. sorry for disturbance. So we will request attendee to put there the name and the mobile number into a chat box to get the e-certificate, sir. That you can just do the announcement for the same. yeah, you can do that. Otherwise, Ramanji, can we share your number or somebody's number where you can get the they can send it to you, Sure. and that way That's a right idea. exercise may take more time. Perfect, sir. Okay. So I'll proceed with the vote of thanks on behalf of Navi Mumbai Raigad Ophthalmologists Association. I wish to convey our thanks to all our wonderful speakers, both our wonderful speakers today, Dr. Neeraj Israni and Dr. Rajesh Kapoor. Warm, heartfelt thanks also to Endod, who have been the brains as well as the hands behind this innovative symposium, and their wonderful IT team who has arranged for all the behind the stage activities as well as the live streaming on Facebook and on YouTube. And I also wish to thank all our participants and OPD staff
OPD and OT staff who have participated in hospitals in our region, so that they can all benefit from this. And ultimately, whatever we have learned today through a wonderful discussion can be transmitted to improve the patient care that we are all so keen and concerned about. Thank you. Thank you. Thank you so much to all the speakers, all the viewers, and Todd, especially Ramanji and the team for this innovative idea. Thank you so much. Thank you, sir. We will request our admin team to be like